between x-axis and the line in the anti-clockwise direction. Right. So whenever we got to consider the inclination of a line, we should first of all focus at what is the angle between the line and the x-axis in the anti-clockwise direction. We don't require an angle we don't require as such. We can consider it also, but we don't require angle in the clockwise direction and for any purpose. So right now, हमारा काम चल जाएगा केवल उस angle से जो line और axis के बीच में है और anti-clockwise direction में बन रहा है. Whenever two lines intersect with each other, basically there are two lines here. Axis X or lines are two lines in fact. They always make two angles, one acute, one obtuse, or two right angles. I'll show you later on. For a while. So inclination of a line is taken as the angle between the x-axis and the line in the anti-clockwise direction. So when I say angle is 120, angle is 30, angle is 45, whatever, it should be in the anti-clockwise direction. That is the inclination of a line in x-axis. Understand? Right, everybody? Clear about this? Yes, sir. Yes, sir. Sure. Right, fine. Yes, sir. So I move from here to the slope of the line or gradient. Now, what is a gradient actually? Gradient is actually, I will take it later on, that gradient is basically a rate of change. But right now हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो एक different aspect है slope को consider करने का. Right now हम slope को ऐसा rate of change consider नहीं कर रहे हैं. आप पढ़ चुके, मैंने बताया था आपको बच्चों कि दो चीजों का rate of change हम पढ़ चुके हैं physics में और हमने graphical values बनाई हैं. तो change in velocity upon change in time gives you the acceleration, right? तो मैंने आपसे कहा था कि जब हमारे पास velocity time graph होता है तो उसका हम slope निकालते हैं. Remember or not? Yes, sir. Yes, Slope yes. हमको Yes, acceleration sir. देता है. Acceleration. या अगर displacement time graph है उसका slope हमको velocity देता है. So what is displacement time graph का slope? Change in displacement upon change in time. What is the slope of velocity time graph? Change in velocity upon change in time. Change the time. V2 minus V1 V2 minus V1 upon T2 minus T1 is a rate of change of velocity also. Now here, let us understand first of all the basic definition. This is a triangle formation by the line. Line एक triangle form कर रही है. अगर ये angle हमारा consideration में angle ये वाला है, right? So this is perpendicular and this is base. All right. This is what? The portion by the line cut on x-axis. And this is on y-axis. So I can say that slope of the line equals to tan theta. Why tan theta? Perpendicular upon base. ये इसकी बिल्कुल simplistic definition है. तो my point is that जब हम slope को measure करते हैं तो हम line के inclination का, what inclination? Inclination with the x-axis in the anti-clockwise direction का tangent निकाल लेते हैं. तो उसको m से denote करते हैं बच्चों. M equals to tan theta, where theta is बोलिए बच्चों क्या? Inclination of the line. Inclination of the line. Angle of inclination of the line. Yes. Inclination of the line. Yes. Theta is the inclination of the line. Theta is the angle between line and the x-axis in the anti-clockwise direction. Understand? So slope is basically tan theta. तो अगर किसी एंगल का, किसी लाइन का इंक्लिनेशन 30 डिग्री का है तो स्लोप कितने का हो गया? tan 30 हो गया, 1/√3 आ गया. सिंपल एज दैट. अगर एंगल हमारा 80 डिग्री का है, tan 80 की वैल्यू निकाल लीजिए, लाइन का स्लोप हो जाएगा. अगर एंगल जो है 45 का है, tan 45 निकाल लीजिए, लाइन का स्लोप आ जाएगा. तो स्लोप निकालना इज बेसिकली टेंजेंट फाइंड आउट करना. ओके, आई शो यू. देन
So slopes can be negative and positive both. Slope can be negative and positive both. How? How slopes are negative and positive? And what does that tell us about the line? Understand the point. The first condition, if inclination is acute in the anti-clockwise direction, if inclination is acute in the anti-clockwise direction, slope is positive. Slope remain positive. Now that means angle is 0 से बड़ा करिए. Angle is 10, 15, 20, 35, 60, 65, 80, 89. Don't take 90. 90 से less. मतलब theta is greater than, equal to 0, less than 90. जब तक इंक्लिनेशन की वैल्यू इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करती रहेगी, स्लोप हमेशा पॉजिटिव बना रहेगा, स्लोप नेगेटिव नहीं होगा. सो व्हेन इंक्लिनेशन इज, डायरेक्शन को याद रखिएगा, इट इज ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो व्हेन इंक्लिनेशन इज एंटी क्लॉकवाइज and angle is acute, that is between 0 and 90, thus the line is having the positive slope. Okay, you all understand that? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. Yes, sir. fine, Yes. right. Let's start a new one. So the second condition. The second condition, if, note on the copy everyone, if this inclination is obtuse in the same anti-clockwise direction, yeah, when slope is in the anti-clockwise direction, slope is obtuse in the anti-clockwise direction, slope is negative. That is when theta is greater than 90 and less than equals to 180. Theta is greater than 90 and less than equals to 180. Slope is negative. Slope is negative. Understand? So if I say, let theta is say 90, okay, 120 degree, then slope is tan 120, and tan 120 की value is same as minus tan 60. आपके कोर्स में नहीं है, मैं फिर बता दे रहा हूं आपको, और उसकी वैल्यू -√3 हो जाती है. तो जब एंगल 120 का हो जाता है तो स्लोप की वैल्यू -√3 हो जाती है. जब कभी भी एंगल 90 से बियॉन्ड जाता है तो टेंजेंट का फंक्शन अपनी वैल्यू को नेगेटिव बना लेता है. ये फंक्शन की प्रॉपर्टी है, आपके कोर्स पे नहीं है, 11th क्लास में आएगा बच्चों. लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू टू मेक यू क्लियर इन योर माइंड. जब एंगल 90 से आगे जाता है तो tan अपनी वैल्यूज को नेगेटिव कर लेता है, राइट? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब एंगल ऑब्ट्यूज होता है मतलब उसकी वैल्यू 90 से ग्रेटर होती है. जब एंगल ऑब्ट्यूज होता है, वैल्यू 90 से ग्रेटर होती है, उसका एंगल कैसा हो जाएगा? ऑब्ट्यूज.
वैल्यू कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी. Negative. Remember, negative. Slope is negative. Slope is negative when angle is greater than 90. Right? I make two diagrams for you. The first diagram for the positive slope and second for the negative slope. Please see very carefully. X-axis and the y-axis. Tell me, theta कैसा है? Theta is Acute. 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 Less than 90. yes. Less than Less 90. than 90. In anti-clockwise direction, it is less than 90, right? And so इस line का slope कैसा होगा? Slope is Positive. 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 For this line, slope is positive. Okay. At the second diagram now. The angle is in the anti-clockwise direction, obtuse. Obtuse angle है, anti-clockwise direction में है. So theta is obtuse in anti-clockwise direction. And slope will be The value negative. will be negative. The slope will be negative. Slope is negative. Slope is negative. That is the case. That is the case. We take slopes negative and positive. Although in both the cases they are perpendicular upon base, they are always. We also call it as x-intercept. इसको बोलते हैं हम y-intercept और इसको बोलते हैं हम x-intercept. Because ये तो एक्सिस x पे कट किया गया है लाइन ने और ये एक्सिस y पे कट किया है लाइन ने. जब इनका हम स्लोप निकालेंगे y upon x, so this will become perpendicular upon base. It is same everywhere, but for angles it might take a change. So for the same condition you should remember. Now in your book आपको दो condition दे रखी है उन्होंने. No need of that. बस जो मैं कह रहा हूँ वो याद रखिएगा. जैसे ही हमारा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑब्ट्यूज होगा तो फिर ये कैसा हो जाएगा? तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्यूट हो जाएगा. जब एंगल हमारा एंटी क्लॉकवाइज में एक्यूट होगा तो वो क्लॉकवाइज में कैसा हो जाएगा? ऑब्ट्यूज हो जाएगा. सो जब हमारा स्लोप पॉजिटिव है, when slope is positive there are two conditions. The first condition that that angle is theta is acute in anti-clockwise direction or theta is obtuse in clockwise direction. इन दोनों ही केस में हमारा स्लोप कैसा होता है? पॉजिटिव. Negative. पॉजिटिव तो पॉजिटिव की ये भी कंडीशन है और पॉजिटिव की ये भी कंडीशन है. I hope you understand that. You all Yes. are clear about this? Yes, sir. Everyone is clear about this? Yes. Sure. Yes, sir. Very good. Yes, Yes, sir. For the second case, when slope is negative, theta is obtuse. In anti-clockwise. Anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction, and theta is Acute in clockwise. Clockwise direction. both the cases slope is Slope is negative. Slope is negative. first case and second case. Who all understood this point? कौन समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
आपको मुझसे एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि अगर हमारा एंगल 90 से कम है और 90 से ज्यादा है तब तो स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव आ रहे हैं, अगर एंगल 90 के इक्वल हुआ तब क्या होगा? सर तो स्लोप नहीं होगा The बिकॉज slope will be not defined. अगर स्लोप तो वो 90 तो परपेंडिकुलर अगर रहेगा। एंगल 90 का तो क्या होगा? आई मेक अनदर स्लाइड फॉर यू। So I make an angle, third case, y और लाइन भी ये बन, सॉरी इनसे को मेरी तरफ कूलर कर ले। उधर से ले, नहीं आ रहा है मेरी तरफ बिल्कुल भी कूलर। उधर जाओ अम्मी। चलिए दिस लाइन मारू लड़ी मत बेटा घर में अपने। Line AB now. Line AB is parallel to y axis, you can see. Line AB is parallel to y axis. Now the inclination is 90. So when inclination is 90, so slope becomes tan 90, and tan 90 is not defined. जो lines parallel to y axis होती हैं, अगर अब ये लाइन कैसी हो गई? This line is perpendicular to x axis but parallel to y axis. So line is normal or perpendicular to x axis or parallel to y axis. Line have undefined slope. लिखिए, all note down this in the copy. Line have undefined slopes. जब lines parallel to y axis होती हैं और perpendicular to x axis होती हैं, तो उनका slope undefined हो जाता है. The slopes is undefined in that condition. Please note down all these informations point by point in your copy. It will be of great importance and usefulness for you later on to solve the questions. There are many questions on the and beyond that, the concept should be clear in your mind. स्टेट लाइन का कंसेप्ट बहुत यूजफुल है, 11th क्लास में आपके बहुत काम आता है, आपको ये कंसेप्ट बहुत ध्यान से करना चाहिए. अंडरस्टैंड? Yes, sir. 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 Right. चलिए, fine. This is done. Yes, sir. Should I move it Yes, sir. all? Sir. Yes, sir. Yes, sir. So we have discussed by now that how do we calculate the slope and what we do to find the slope and what not. So I have told you by now three main points. But the slope is basically equal to tan theta Tan theta. and slope can be negative and positive both. Yes. And slope can be undefined as well, right? Yes. So when theta is greater than equal to 0 and less than 90, it is positive. And theta is greater than 90. I'm not including 90 anywhere. You can see that. मैंने यहाँ भी 90 को इंक्लूड नहीं किया, यहाँ भी 90, बिकॉज Yes, sir. 90 में तो हमारी थर्ड कंडीशन बनेगी ना, तो हम 90 में थीटा को Yes, sir. इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम 180 को इंक्लूड कर लेते हैं बिकॉज tan 180 is 0 actually, right? So I got and the third condition, when theta is right away equals to 90, slope is undefined. Undefined. कौन मेरी इतनी बात समझ गया सारी?
Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Okay. So Yes, sir. it is a summary of Yes, sir. when we got an inclination of a line known to us, and to find a slope, we should find the value of tan theta, where tan theta is actually, it can be negative or positive or undefined. That depends. That's how we get our values from the slope, from the inclination line, right? The Yes. other, Yes, the sir. other, Yes, the other point in the slope is that it provides us the the mean to find out whether lines are parallel or not parallel to each other, or whether lines are perpendicular or unperpendicular to each other. What is all about? Let us see this carefully here. So I make a graph for you again. Can you see that? Can you see that all? So this is a Yes. these are two, parallel lines. Theta 1, theta 2, angle is 90. Now, so lines are parallel. Theta 1, theta 2, angle is 90 here, right? What is happening in these two? अब बताइए बच्चों मुझको, इसका स्लोप, ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल होंगे तो क्या इक्वल होगा? ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे. Parallel lines. ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे और थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 आ जाएगा. They'll have same inclination. They'll have same inclination. That means इनका जो टेंजेंट आएगा वो भी आपस में कैसा होगा बच्चों? इक्वल होगा. और m1 इक्वल टू m2 होगा if line L1 is parallel to L2. मान लीजिए L1 लाइन है और ये L2 लाइन है. Understand? So, Yes, to sir. remember this point carefully, when lines are parallel to each other, they have an equal inclination with x-axis. जो लाइन आपस में parallel होती हैं, उनके inclinations x-axis से हमेशा equal आ जाते हैं. You make more lines here, no problem with that. You can make more lines here. They all are parallel. They all have equal inclination. Can you see that? Yes, sir. They have Yes, sir. equal inclination. Yes, sir. And so the thetas are all same. The thetas are all same. And so all the slopes are also same across these lines. मैं इसको अगर एक family of lines consider कर लूं, तो I will find out that सबके slope कैसे आ जाएंगे? Equal आ जाएंगे. सबके slopes equal होंगे. Equal. चाहे वो negative हो जाए positive हो, doesn't matter, but वो होंगे definitely एक दूसरे के equal. So when lines are parallel, the slopes are always equal to each other. लिखिए यहाँ पर, लिखिए first condition. Condition for parallelism of a straight line is, बोली क्या बच्चों होगी? m1 equals to m2. अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप को आपस में इक्वल होना पड़ेगा. और उसका उल्टा सोचिए, अगर लाइंस के स्लोप इक्वल हैं तो वो आपस में पैरेलल लाइंस बन जाएंगे. Parallel होंगे. If lines are if lines are parallel, their slopes are equal, and if their slopes are equal, lines are parallel to each other. That is what we can make out with a condition for parallelism of two straight lines. Understand? Is that fine with you? Yes. Okay. Yes, sir. Okay. The second condition now. Condition for
perpendicularity of two straight line. Whenever lines are, say the slopes are say m1 and 2, मैं आपको इसका प्रूफ करके नहीं बता रहा हूं बिकॉज जो फॉर्मूला यूज किया गया है इसमें वो आपके सिलेबस के बियॉन्ड है, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस. सो व्हेनेवर हम लाइंस का स्लोप निकालते हैं, सॉरी लाइंस की परपेंडिकुलर की बात करते हैं, और अगर वो स्लोप्स आपस में वो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो remember the condition here. Now don't take the proof of this. I'm doing it without proving for you. So m1 into m2 equals to -1, right? That means the slope of one line is the negative reciprocal of the other line. Understand? Yes, sir. Slope Yes, sir. of one line is a negative Yes, sir. is a negative is a negative, reciprocal of the other. So the very two important points. So suppose slope of one line is 2, another is minus, then and they are perpendicular, then other slope should be -1 upon 2 outrightly. There is no doubt beyond that, isn't it? Clear? So Yes, sir. Yes, sir. remember this second Yeah. point. Yes, sir. Whenever lines are parallel, to each other, their slopes are equal to each other, and whenever lines are perpendicular to each other, their slopes are having the negative slope. Understand? Is that clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sir. yes. Right. Right. So first condition and the second condition. Yes.